Hello and a very warm welcome. Thank you, Arvind, Preeti, Shiv, Vikas, and Madhulika for joining in. Today, we are diving into the next part of this book, this chapter, that is going to talk about something even deeper, right? कि attractor pattern के पीछे scientific क्या है? So let me start sharing the screen so that we can read it together. Because ऐसे हवा में मैं बोल नहीं सकती कुछ. I am a baby to this book. All right. So here is the book for you. The scientific background of attractor patterns. The evolution of this work, which began in 1965, was fostered by developments in numerous scientific fields, of which three were of special importance. Number one was clinical research on the psychology of the nervous system and the holistic functioning of the human organism, resulted in the development in the 1970s of the new science of kinesiology. Meanwhile, in the technological arena, computers were being designed that were capable of millions of calculations in milliseconds, making possible the new tools of artificial intelligence. This abrupt access of formerly unconceivable masses of data began a revolutionary perspective on natural phenomenon, chaos theory. Okay. Simultaneously, in the theoretical science, quantum mechanics led to advanced theoretical physics through associated mathematics. A whole new study of non-linear dynamics emerged, which verified that there really is no chaos in the universe. The appearance of disorder is merely a function of the limits of perception. This is so beautiful, right? कि परसेप्शन के ऊपर सारी दुनिया कायम है. Yes, because we are reading The Map of Consciousness Explained. That is the name of the book. I'll be sharing, if you are part of the community, if you are part of the book reading group, I'll be sharing all the recordings tonight and you can go through them. We have a good weekend coming ahead. Coming ahead, so you can go through it, and then Monday will be day 5. So we meet again, we'll read, and then we will decide whether we are moving forward with us or not. ठीक है? By whom actually, author? David के आगे क्या है? Hawkins. Hawkins. David Hawkins. Okay, fine, thank you. So this is actually, I also believe in it, कि perception, जब we look at things as we perceive it. कल भी हमने जो सेशन में स्टडी किया था, हमने यही समझा था कि हाउ द कॉन्स्टलेशन में जितने भी स्टार्स हैं, दे आर फार अपार्ट, दे आर नॉट एट ऑल एसोसिएटेड एनी हाउ, बट it is our perception to see it as whatever it is, right? Yes. Attractor is the name given to the identifiable pattern that emerges from the seemingly unmeaningful mass of data. There is a hidden coherence in all that appears incoherent. This inner coherence was first demonstrated in the nature many decades ago by Edward Lorenz, the MIT mathematician and meteorologist who studied computer graphics derived from weather patterns over long course of time. What appeared on the surface to be chaotic, disconnected phenomena turned out to actually to a coherent pattern. Noted on the attractor pattern he identified, known as Lorentz butterfly. And this is the pattern. Okay. Lorentz demonstrated the interrelatedness of seemingly unrelated phenomena, such that small changes can have very large effects. As he put it, the flap of the butterfly's wings might ultimately become a tornado. This was his famous butterfly effect, a discovery that challenged Isaac Newton's clock
work universe. The conventional deterministic view of nature at the time. Lorentz findings revolutionized the understanding of the phenomena which emerge as a consequence of interacting attractor pattern and not linear causality. Most important to our research is the discovery that some attractor patterns are very powerful. Willingness, for instance, or love, and others are not are much weaker, that is guilt or anger, for example. There is a critical point that differentiates the two distinct classes. This phenomenon of consciousness is parallel and corollary to the high and low energy bonds in the mathematics of the chemical bond. A field of dominance is exhibited by high energy patterns in their influence over weaker ones. This may be likened to the coexistence of a small magnetic field within the much larger, more powerful field of a giant electromagnet. The phenomenological universe is the expression of the interaction of endless attractor patterns of varying strengths. चलो पहले इतना डिस्कस करते हैं नहीं तो हैवी हो जाएगा. Good evening, Neha. Thank you for joining in. Okay. So I'll share what I understood, and then I think we can take one by one. Ki what did you understand, right? Because I know you all know a little more than me, right? Book says कि from chaos emerges a hidden pattern. इससे जो मेरे को एक छोटा सा एग्जांपल समझ में आता है दैट इज कि जब मार्बल्स जो होते हैं वो फ्लोर पे गिर जाते हैं दे लुक वेरी रैंडम दे गेट स्कैटर्ड बट अगर फ्लोर की स्लांट किसी एक तरफ होती है इट इज टिल्टेड all the marbles no matter how scattered they are all marbles slowly roll on one side that tilt what I understood is the attractor that means what as per my understanding that attractor is an invisible organizing force. उसके बाद लॉरेंस बटरफ्लाई एंड क्योस थेरेपी की बात हुई है थ्योरी साइंटिस्ट ने वेदर को स्टडी पैटर्न किया दे थॉट कि जो वेदर का पैटर्न है इट वाज रैंडम एंड देन दे डिस्कवर्ड समथिंग शॉकिंग दैट वाज स्मॉल चेंजेस tiny changes create a massive result later. इस किस्म के पैटर्न्स में भी हमारे को बहुत सारी जगहों पे दिखते होंगे यू नो इवन द ईसीजी की जो रिपोर्ट होती है दैट आल्सो प्लेज अ पैटर्न राइट इवन व्हेन वी लुक एट द स्टॉक के जो क्या होते हैं ट्यूब्स होते हैं जो भी होते हैं वो दे आल्सो हैव अ पैटर्न and every tiny change creates actually massive results and this is something like what I understood is a butterfly effect tiny shift in consciousness today can make us completely a different person tomorrow for example अगर मैं आज एक छोटी सी सिचुएशन में आई चूज कि आज मैं रिएक्ट नहीं करूंगी आज मैं रिस्पॉन्ड करूंगी and I consciously choose that again and again 5 years down the line my personality will be totally different as per that small change this is what I understood ठीक है now I would invite any of you please raise your hand and let me know who would like to go first I'm dropping will catch up recordings to connect well great Okay. Can I share?
Yes, please, Anand. So what I discovered from this is like he said, as you mentioned, even initially scientists used to think that everything the world is chaotic, random, or unpredictable, but they found there is a pattern, you know. And for this, there are three big scientific shifts, they mentioned. It's about one is kinesiology, computer and chaos theory, and third was quantum physics. Especially they something mentioned, I think non-linear dynamics, right? Mm-hmm. So kinesiology again, it was about they discovered how body responds intelligently as one whole system, like through muscle testing. Oh, actually, that Computer, reminds me of कि हमारी बॉडी भी तो ऐसे ही काम करती है. We feel कि कितना chaos होगा ना अंदर. But that is also very nicely made thing. There's some see, rhythm to it as well. similarly, when you are mentioning body, so suppose if someone has a problem in his suppose kidney, तो डॉक्टर स्पेसिफिक दवाई देते हैं, राइट, प्रिस्क्राइब करते हैं, जो उसका जो इशू है वो रिजॉल्व होता है किडनी का, राइट. सो इफ देर इज एन इशू इन आवर सेल्स इन स्पेसिफिक ऑर्गन और उसके सेल्स में, तो स्पेसिफिक उसके लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन देते हैं उसको ठीक करने के लिए. मतलब ठीक क्या करना है, मतलब उसको रिस्टोर किया जाता है बेसिकली, राइट, लाइक रिस्टोर करते हैं. तो सिमिलरली इफ वी सी द और जो सेल होता है, जो बॉडी का जो एक सेल है, उसमें अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया है, जो पावर हाउस है ना. जैसे हमारा ब्रीदिंग है वैसे उसका पावर हाउस है, उसका अपना गोल्जी बॉडीज है. मतलब जैसे हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन है, उसके भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं एग्जैक्टली जैसे हमारा बॉडी है. सो अगर एक सेल जो है और वो बाकी सेल के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, इन हार्मनी में है ना. सो जिस तरीके से एक सेल को ठीक किया जा सकता है, और अगर वो गड़बड़ हो गया एक सेल, वही एक सेल एक्चुअली कैंसरस ट्यूमर में कन्वर्ट होता है. अगर एक सेल से ही वो शुरुआत हो रही है सब कुछ, राइट, एंड इट इज अफेक्टिंग अदर्स. तो जैसे इसमें भी बताया कि अगर एक पर्सन हेल्दी है तो बाकी को भी हेल्दी कर रहा है, मैनेज कर रहा है. एक अगर गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब वो बाकी भी दुनिया पे इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत सारे लोगों पे. तो जैसे हमारे बॉडी के सेल भी करते हैं. सो इफ वी सी आवर सेल्फ जस्ट लाइक अ सेल इन दिस यूनिवर्स, तो अगर इफ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, तो ये पैटर्न बटरफ्लाई इफेक्ट होके सब जगह होने वाला है. एंड इफ आई एम नॉट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, तो ये मैं खुद ही एक ट्यूमर हूँ, जो ट्यूमर का काम शुरू कर रहे वाला हूँ, यू नो. सो दैट इज व्हाट इज ओपनिंग अप फॉर मी, राइट. एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. जो बटरफ्लाई इफेक्ट से, एग्जाम्पल जो आई थिंक वो MIT साइंटिस्ट जो एडवर्ड थे, जो बता रहे थे बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में. या सो एन अट्रैक्टर इज एन, जो अट्रैक्टर का बात बताया, अट्रैक्टर इज आई थिंक वी कैन से इट अ हिडन ऑर्गेनाइजिंग फोर्स दैट पुल्स थिंग्स इनटू अ पैटर्न. चाहे बर्ड्स का फ्लाई होना हो, फिश का टर्निंग होना हो एक साथ, या स्टॉक मार्केट का रिपीटिंग साइकिल्स दिखाना हो, या ह्यूमन के इमोशनल पैटर्न्स हो, यू नो. So and if you are, how we keep on attracting the same kind of people in yeah, our lives again and again. yeah, It's if your also attractor is fear, oh sorry, you continue. हाँ बोलिए वो बोलिए. वही कि there is a pattern to it as well ना. There is something that needs to break from that pattern so that you don't attract the kind of people or maybe keep attracting the kind of people you're attracting in your life. Yeah. So if our attractor is fear, we see threats everywhere. Yes. If our attractor is love, we see opportunities everywhere. If our attractor is anger, then we get someone जिसके ऊपर एंगर एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा. कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आपकी लाइफ में आ जाएगी that you will get सिचुएशन आएगी, लोग आएंगे, दिस विल हैपन, जिसको हम लोग yeah, this is what it all about. And that means that how we see na ki we are an average of 5 people we surround ourselves with. So that is also not a coincidence maybe.
We have attracted those people and that is why we are like them. And अगर हम अपने आप को उस पैटर्न को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, तो we try to be in a group of people so that we start matching to their energy. वो हम्म उस अट्रैक्टर में फिट होने की, हाउ दे से ना कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, तो ओनली दिस फ्रीक्वेंसी पीपल आर गोइंग टू गेट क्लोजर टू यू. इफ यू रेज योर फ्रीक्वेंसी टू हियर, तो फिर इस फ्रीक्वेंसी के आसपास के इतने लोग आपके साथ अट्रैक्ट और अटैच होंगे. तो एग्जैक्टली नाइस. एग्जैक्टली. एंड इस चीज को प्रैक्टिस करने से इफेक्ट होता है ये सब. इट्स नॉट जस्ट अ थ्योरी. मैं आई वाज इन मुंबई. आई लेफ्ट मुंबई एंड आई शिफ्टेड टू बैंगलोर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. I wanted to be among those who are achievers as well as who are spiritualist. Wow, So yeah. wonderful. Anybody wants to share anything more on this? Any thoughts, ideas on this? Anji, Preeti, you want to say something? Like all the devices, they work on the same like pattern. Yes. And we also maybe we also attract the same like if what is our nature, and we like the people who think like us. Or like if you like peace, or then you like all those people like who are like more, you can say, calm and more helpful and supportive. And and when you try to make any changes, it we cannot say that it is waste. जैसे हमने अगर पानी का जैसे ग्लास लिया और उसमें एक ड्रॉप भी दूध डाला, तो उससे जो पानी का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, और उस ये नहीं है कि वो जो दूध की ड्रॉप है वो वेस्ट हो गई, है ना. इट विल स्टिल लीव सम इफेक्ट ऑन दैट, कि वो जो इफेक्ट वो रहेगा. It will make a difference in that. Yes, every tiny shift Yes, is going to bring. it And वही will एक make एक a ड्रॉप difference. करके वो हम अगर Yes. बूंद उसके अंदर डालते जाएं, there will come a situation Yeah, wherein the yeah. entire glass will be full of water only, and the sorry, water नहीं, milk, है ना? It will turn into milk only. And it will add to our like growth, to Yes. our physical and mental growth. Wow. That's amazing. Nice. Thank you for that insight, Preeti. Thank you. Yes, Shiv, do you want to share something on this? Yeah, I can, but I was just wondering if somebody else would like to share, then they can take it and then I can come back. एक सेकेंड, आपकी आवाज बिल्कुल धीरे हो गई है. Are you able to hear me? Yes, now yes. No, I'm saying that, yeah, I can definitely share my observations, but I was just wondering if somebody else wants to share something, then I can probably come in later. बोलना एक मिनट फिर से. Sorry. Can you hear me? Yes. Okay, I'm saying that I can, of course, share something, like I can share my observations, but I want to know if somebody else has something to say, then I can probably come in later. Neha, do you want to share something? Shiv, take over. Okay, so I think again, this is a very deep concept. Like when you talk about attractor field, so attractor as a concept, just so attractor as a concept, I feel is like it is not a thought. It is not just imagination. It is a field. It is an energetic field, right? And just as gravity holds objects, attractor fields
pull interpretations or emotional Hmm. reactions or life patterns also. Okay. Mhm. So, for example, a person calibrated in fear, Hmm. okay, lives in fear attractor field. I'll give Yes. you an example. For example, people who have anxiety disorders, Hmm. okay, most of the anxiety that they suffer from is, of course, because of a systemic issue in the brain. It has nothing to do with their subjective character. Like, see, I cannot name a person bad or good or whatever it is based on the behavior that is exhibiting because of some anxiety, because it's a system. There is a malfunctioning happening with it. Hmm. So the person and the person who is having any kind of anxiety disorder is basically suffering from two things. One is fear and doubt, Hmm. right? And the person calibrated in fear. So basically, any person who is in this condition and who's calibrated in fear lives Mhm. in fear attractor field. Hmm. A person calibrated in love, for example, lives in love attractor field. Okay? Hmm. So these are all attractors are basically fields. Mhm. Okay. In Hawkins' framework, an attractor pattern is an energetic field of consciousness. Mhm. For example, I've seen a lot of spiritual masters, for example, Sri Ravi Shankar or so many other Mhm. spiritual leaders. They operate from a love attractor field. Hmm. Okay. And that is why their consciousness is so high, because that is at the top of the ladder. True. Now, an attractor pattern resembles something like a core belief system or Mhm. deep unconscious schemas. Mhm. It could be emotional set points. Mhm. Okay. And when you look at all this in unison, it is like a stable inner energetic structure Mhm. that automatically shapes outer experience or behavior. So Hmm. it's an inside out thing. It's not outside in. Got it. Hmm. And it is not like, as Arvind also explained, that this is not like some random thing. Hmm. Nothing is random. Hmm. Like, for example, let's say an attractor field generates A, B, C. Okay. Mhm. For two people, for example, two people lose a job. Hmm. One sees an opportunity, the other one sees catastrophe. Mhm. Okay. The Yes. external event is the same. The attractor field differs. Differs. Yes. Okay. Somebody who's operating above the line of courage is Hmm. probably looking at it as an opportunity. Anybody Opportunity. Yes. somebody who is operating below fear, I mean below courage, like fear or anxiety or something, he is looking at it as a catastrophe. Yes. Right? Now, we are not reacting to events. We are actually reacting from a level of consciousness. Consciousness. And if you look at it, yesterday also we were talking about interpretation, Hmm. that you see, there is no meaning actually for any event or experience in this world. We humans, we give meanings to event and experiences. Okay? We are meaning-making machines, right? And this is exactly what we were talking yesterday also about the, Viktor Frankl, and about the purpose and how that level of consciousness, the purpose, changes everything. Your Mhm. thinking, your consciousness, your perception, everything changes. Same event, Hmm. but different patterns. Okay. And so these are basically invisible internal patterns. Hmm. Okay. We can't see it because it is internal. Hmm. So the inner field in which we are operating precedes the outer form. Okay. Hmm. And like lower consciousness states, for example, shame, anger, generate a lot of conflict, instability, or, in case of relationships, for example, repetitive drama. Hmm. Okay. That maybe that is why they say that your outer world is the reflection of Reflection. your inner world. Of course it is. Of course it is. Because the moment you change your inner state, your outer world also changes. Okay. And higher states like acceptance, love, etc., generates cooperation, Hmm. creativity, coherence. Hmm.
So he's basically saying that all this um, inner chaos and inner coherence. So, for example, if there is inner coherence, there will be outer coherence. If there is inner chaos, there will be outer chaos. And what looks like chaos is actually not chaos, because Carl Jung famously, you were like reading about something related to Carl Jung yesterday also, the famous Swiss psychologist. And he also has famously quoted that in all chaos, there is cosmos. In all disorder, a secret order. And this is a very powerful thought, because it took me a long while to understand what he's trying to say when I thought about it. That in all chaos, it apparently looks that it is chaotic, right? But it is not chaotic. There's a certain pattern. For example, you were yesterday discussing about that V shape, V shape in which the birds fly. Birds fly in the V shape. Yes. So it's basically called, it's a phenomenon called murmuration. M-U-R-M-U-R-A-T-I-O-N. Murmuration. So murmuration is actually a spectacular natural phenomenon, and it is happening unconsciously. The birds are not so conscious like us that they understand all this, but they're doing it from native intelligence, because the cosmos, the universe itself is intelligent enough to make them do that, because they see some kind of frictionless movement in that pattern. So basically, it's a murmuration is basically a spectacular phenomenon where hundreds of thousands of starlings, like small birds, fly together in a highly synchronized shape-shifting pattern, often during dusk, not at dawn. They do it only when going back to their nest. Right? So is it the same? Is it same like how we see ants always follow the next ant? They're always in a queue. Yes. Everything is a pattern. Everything is a pattern. So, and if you look at the V shape, the V shape is not followed by the smaller birds. The larger species, like the migratory birds, like the geese, the swans, the cranes, the pelicans, these are the ones who fly in a V shape. Why? Because they need bigger space, bigger area to fly. And for them, this murmuration, what I told, so you can probably Google it. Murmuration is basically a particular pattern which is followed by the smaller birds, like the starlings and smaller sparrows and all that. But when you go to the bigger birds, like the geese and cranes and pelicans, you will see a slightly different shape, like a V shape. But again, that is a pattern, right? So everything that looks to us as if it is a layman looking at that murmuration phenomenon, feel that it is a random flying, kind of a pattern, random things. But why are they flying every day during dusk in the same pattern? Okay, there is some kind of intelligence or consciousness which is driving this behavior. So, so I feel that, there are a lot of things here. For example, everything in nature follows a certain pattern. For example, if you look at people who suffer from some mental health issue, okay, they have a pattern, they follow pattern. Their behavior follows a certain pattern. All of them are exhibiting some behavioral issues like avoidance. Why? Because of fear. Okay, so there is avoidance, there is this feeling of hyper responsibility, there is this feeling of, fear. So everything that is happening with people who are exhibiting similar kind of issues, whether it is good or bad, has a pattern. For example, Olympic athletes. All Olympic athletes, see, human beings normally have 50 to 60,000 thoughts per day. Yes. Okay. But Olympic athletes only have 15,000 thoughts in a day. Wow. Yeah. And many of them may not be scientists, may not be knowing this, but they are doing it. Why? Because they are so focused, laser focused, that they have to win, that they forget everything else in this.
right? That's And I think talking about the chaos theory, which you talked about earlier. So why is Hawkins bringing in chaos theory? I feel that they're highly sensitive to initial conditions. For example, um, weather systems, stock markets, ecosystems, human brain. All of these use chaos theory to argue that human consciousness is not linear. It is dynamic. It is non-linear and is field-based, right? So instead of saying event A, B, C, he suggests that it is underlying field conditions which influence certain probabilities which shape some outcomes. Okay. So it's definitely non-linear, no doubt about that. And when we talk about that butterfly effect or something, these are looks like totally independent events, but they have a ripple effect. So a small butterfly flapping its wings somewhere in North America is causing a tornado in maybe, Thailand. Yes. So what appears totally disconnected and independent are actually highly connected. Oh, this reminds me of how, if we stand on so there is a bus that is falling off the cliff. Hannah, a single deep breath can actually land the people in the, Yes. listening. So that single shift can also एक छोटा सा पत्थर कहीं से वहां पे से उस टाइम पे हिल जाए तो पूरी बस इज गोइंग टू गो डाउन द हिल, Yes, possible. है ना? So This is everything in the universe interesting. is a delicate balance. Delicate balance, yes. And if you look at it, if you look at the chaos theory or the non-linear dynamics, what he talks about, it's a small shift from, let's say, fear to courage. Below 200 is fear, above 200 is all the other higher states. It's not small. It's a phase shift. Yes. Okay. It reorganizes the entire system. The shift may be small, but the impact is massive. Like people who are living below courage, point of courage, they are living a totally different quality of life. The people operating above courage are totally living a totally different quality of life. Yes. Right. So this attractor pattern is very, very, I think, significant in the scheme of overall, nature and the universe even. For example, I studied mathematics at the university level. So there is something called fractals. If you go to the seabed or ocean bed, you will see that there are a lot of, what should I say, plants or formations, coral reefs. Okay. These are all following a certain mathematical pattern. They're called fractals. Okay. And fractals have a very significant, place in nature also, because if they don't have that particular shape or pattern, they will not probably have those properties. Okay, or maybe they will not survive in that space either. Yeah, so nature is creating this. Nature is basically influencing different kinds of living beings or different kinds of things to take certain shapes and patterns. हाँ, मतलब कि वही ना, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में कैमल है, कैक्टस Yes. है, एंड ऑल ऑफ दैट Yes. बिकॉज ऑफ द एनर्जी फील्ड दैट is holding there. Yeah, so the meaning is that there is certain inner consciousness that every organism, they may not be human consciousness, they may not be having that level of human consciousness, but everything's been driven by certain, deep inner consciousness which is coming from the universe. Universe is creating people like that or things like that. Yes. हाँ, किसी ने नहीं सोचा कि यूएस में लोग गोरे होंगे, यहाँ पे वीटिश होंगे, वहाँ पे ब्लैक होंगे, वहाँ पे ये होंगे, and everybody has different kind of energy levels, everybody has different kind of body types and everything. And of course, the
weather conditions, the plantations, the fields, everything. Yeah, so if you Every- try to connect the dots, like starting from patterns in nature to fractals to murmuration to butterfly effect to human life patterns, consciousness fields, if you look at all this and try to connect the dots, it looks random, but actually it's not random. The system and pattern behind everything that is happening, whether it is human behavior or whether it is, the sun rising or the sun setting or everything, like planetary motions, everything has a certain pattern. And I think we need to take some cues from this, because this means that I think although we believe we are everything and we are the greatest people and we are powerful and so on, we try to actually become more powerful than nature sometimes. And nature, shuts us down through a tornado or a tsunami or something like that, because it shows that we are nothing in the overall scheme of things. This reminds me of a very beautiful line that I have heard several times since I was growing up. That is कि उसकी रजा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता. Exactly. तो whatever वो उसकी जो है, that is that एनर्जी फील्ड हो, वट एवर वी कॉल इट, मतलब कितना साइंटिफिक बोल दो, कितना अपना नॉर्मल ह्यूमन लाइफ अपनी लेमन लैंग्वेज में बोल लो, बट देयर इज समथिंग दैट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग एवरीथिंग इनटू its existence. And there's a higher order system. There's a higher order system which is not decided by human beings, but is being decided by the universe itself. So, and if life is fractal and non-linear in nature, then you don't fix life by fixing isolated events. You shift the underlying pattern. This is what I want. Wonderful, wonderful. Thank you. Thank you for sharing that. Happy. Any views? Or shall we move forward? Yeah, it was very nicely explained. And what is opening up for me here is like basically attractor factor जो है, like in neuroscience we call it, एक हमारे body brain का एक part है, उसको RAS बोलते हैं. RAS, yes. So reticular activating system, it's act like a radio antenna. जैसे हम लोग अगर मेरा 98.3 FM पे मैंने ट्यून इन कर लिया मेरा रेडियो, so whatever songs are there जो प्ले हो रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी पे आई कैन हियर, राइट. और जैसे मैं शिफ्ट करता हूँ 94 पॉइंट समथिंग, दूसरा मैं कुछ लेता हूँ, वहां के गाने मुझे सुनाई देते हैं. सो गाने अभी भी बज रहे हैं हर जगह, इट्स जस्ट दैट मैं कहाँ पर ट्यून इन हो रहा हूँ. Wonderful. I love this example, and I take this example a lot. कि you are like a radio जिसकी frequency जहां पर fit करोगे उसी के गाने सुनाई देंगे, and there are some frequencies जहां पे सिर्फ होता है. और दूसरा चीज ये है इसमें, अच्छा आप बोलिए, कोई बोल रहे थे. प्लीज go ahead. दूसरा ये है कि रेडियो से भी ज्यादा यूट्यूब हम यूज करते हैं. इफ यू सी यूट्यूब, अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ उस पर, लाइक अगर मैं डेविड हॉकिंस के बारे में सर्च कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे सजेस्ट करता है. मैंने एक ही बार पूछ दिया, हो गया, बट इट विल ऑटोमेटिकली इट इज सजेस्टिंग अस बिकॉज नाउ इट नो व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन. मतलब मेरा अट्रैक्टर फैक्टर क्या है उसको समझ में आ गया. नाउ इट इज प्रोवाइडिंग मी द डेटा व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, राइट. So everything is actually complete, So RAS को अगर हम देखेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि आई एम अट्रैक्टिंग थिंग्स, राइट. जैसे रेडियो का फ्रीक्वेंसी है वैसे ही मेरे इमोशन का फ्रीक्वेंसी है. On which frequency I am tuned into. If I am tuned into anger, then I will only get angry and I will only attract situations and people who can make me more angry. Like it's like I am saying to the universe that I am the receiving center of anger. Please send more anger. And when I am tuned into love frequency, I am saying, okay, I am receiving center of love. Give me more love.
So, do you think we have some choice over, which frequency we want to Of stay course. in? या इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे अगर मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी का एंगल लेता हूँ मैं, अगर ठीक है, Mm-hmm. सो क्योंकि ये पैटर्न की जब हम बात करते हैं, Hmm. सो लाइक आई एम अ एस्ट्रोलॉजर एज वेल, लाइक मेरे जनरेशन से एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस हो रहा है। Mm-hmm. सो आई इंटीग्रेट साइकोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते थे इसे। एस्ट्रोलॉजी इज अबाउट अलाइनमेंट। Mm-hmm. बेसिकली पैटर्न्स है जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, एक जैसे हमको क्या है ना, एक सिचुएशन में हम जाते हैं, राइट। जैसे हम लोग अभी सब लोग कनेक्ट हुए हैं सिमिलर काइंड ऑफ इंक्लिनेशन वाले, इंटरेस्ट वाले, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट आई हैव, मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं इसके बारे में, राइट। सोच के नहीं आया मैं यहाँ पे कि मैं जैसे आपसे मिलूंगा या फिर शिव शिव यहाँ पे मिलेंगे एंड ऑल। इट जस्ट हैपन। Hmm. सो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, Hmm. एक तो अट्रैक्टर फैक्टर है, बट इस फ्रीक्वेंसी में अभी मैं क्यों गया, Hmm. तो उसके लिए सिचुएशन हमारी लाइफ में कुछ आई जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं था। Hmm. इट्स जस्ट अ प्लैनेटरी मूवमेंट हैड हैपन, जिसको हम लैंग्वेज में वहां पर दशा सिस्टम बोलते हैं, कि अभी ये दशा चालू होगी, वो दशा चालू होगी। सो प्लैनेट्स आर मूविंग। तो जो पैटर्न है ये यूनिवर्स का जो कंट्रोल कर रहा है, तो बेसिकली देयर इज सम पावर, राइट, हु आर कंट्रोलिंग थिंग्स, राइट। Hmm. जैसे अभी यहाँ पर किसी को अनम्यूट करना है, म्यूट करना है, यू आर डूइंग इट। Hmm. देयर इज अ पर्सन, देयर इज समथिंग हायर ऑर्डर जो हो रहा है, तो उसको प्लैनेटरी एनर्जी बोलो। Hmm. नाउ तो क्या हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल है? तो अगर सब कुछ तो पैटर्न है, सब कुछ तो वही हो रहा है, तो डू वी रियली हैव अ कंट्रोल? Hmm. तो अट्रैक्टर फैक्टर मेरा काम कर रहा है, राइट। जिसको Hmm. हम ओके, मेरे प्लैनेटरी अलाइनमेंट ऐसी हो गई जिसके कारण चीजें हो रही है, तो क्या मेरे हाथ में कुछ है भी या नहीं है? सो हमारे हाथ में होता है कि जैसे यहाँ पर ग्रुप में आना है या नहीं आना है। जैसे लिंक मैंने देख लिया, ओके, Hmm. ये आया मेरे सामने सिचुएशन, ये मैंने क्रिएट नहीं किया था, Hmm. आया। नाउ व्हाट विल आई डू? 95% ये भी पहले से डिसाइडेड है बेस्ड ऑन माय पैटर्न्स, Hmm. कि ओके मुझे इस चीज में इंटरेस्ट होगा या नहीं, किस किस चीजों में मुझे इंटरेस्ट, ये पहले से ही पता है ना। जैसे Hmm. यूट्यूब का रील्स कोई आएगा, जो बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आप किसी को तो क्लिक करते होंगे। किसी को क्लिक करोगे। अच्छा, क्यों आपको वो क्लिक करना है? क्योंकि लॉगे जो पूरा डेटा है उसको पता है कि आप किस चीज में इंटरेस्ट होने वाले, वही आपको सजेस्ट कर रहा है बेसिकली। Algorithms. एल्गोरिदम पूरा वैसे ही काम करता है। सिमिलरली यूनिवर्स भी वैसे ही काम कर रहा है। जैसे शिव आए, उनको कहीं ना कहीं उनकी वाइफ ने बोला कि अच्छा ये आपको इंटरेस्ट देगा, मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन टू दिस, या मैंने वो नाम देखा तो मुझे इंटरेस्ट आया, आई केम इन टू दिस। तो नाउ ये जो चीज है ना, ये पहले से ही है एक तरीके से। 95% ये पहले से ही है कि हाँ आई एम गोइंग टू गो इन टू दिस, लेकिन स्टिल 5% हमारे पास ये होता है कि नो आई विल नॉट, यू नो। बट चॉइस हमारे पास होती है। जस्ट लाइक अब जब भी मेरे पास कोई आता है तो सबसे पहले मैं उसको काम करवाता हूँ, सारा यूट्यूब का हिस्ट्री डिलीट करवा देता हूँ उसका मैं, और फिर मैं उसको पूछता हूँ कि तुमको क्या चाहिए। ओके मुझे हेल्थ ठीक करना है, तो हेल्थ के कुछ दे दिया कि सर्च करो, अभी इसको डालो, गूगल में डालो, यूट्यूब पे डालो। और क्या करना है, रिलेशनशिप अच्छा करना है, वो डालो। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी आर टेकिंग कंट्रोल इन आवर हैंड। ना उसको चीजें देखेंगे, ऐसा नहीं कि वो बंद कर देगा, बट नाउ वो उसको यूज कर रहा है उसके एम्पावरमेंट के लिए, rather देन गोइंग विद द फ्लो। तो क्या हमारी चीज में हाथ कंट्रोल है? हाँ है। लेकिन अगर हम वो नहीं कर रहे तो जो सामने रील दिखेगा, आप यू कांट कंट्रोल रेजिस्ट कि हाँ ये तो मुझे चाहिए, आई वांट टू सी दिस, बिकॉज इट विल गिव मी डोपामाइन इमीडिएटली। तो यस, हमारे हाथ में कंट्रोल है, बट दैट कंट्रोल, इट्स लाइक सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे ये हमारे कंट्रोल में है। सो इट्स अ, जैसे कर्मा भी है ना, इट्स अ डायनामिक्स, इट्स नॉट प्री डिसाइडेड बट स्टिल वी हैव अ चॉइस। या सिमिलरली यहाँ पे डेविड हॉकिंस जो बता रहे हैं कि या दीज आर पैटर्न्स, जैसे सीड है, इतना क्या बर्ड के पास भी जाने की जरूरत नहीं हमको, वी शेप का एक सीड है जो कि यू नो कितने साल वो ऐसे ही रहेगा पड़ा हुआ कहीं पे, लेकिन जैसे उसको वाटर मिला,
हीट मिला, वो Hmm. जर्मिनेट हो रहा है, राइट? और Hmm. उसको सब पता है कि क्या करना है। Yes. उसको पता है कि ओके इस समय पे क्या करना है, पेड़ बनना है, उसके बाद फ्रूट लगाना है, फिर उसके अंदर भी सीड डालना है। इट्स ऑल पैटर्न। Hmm. और उस सीड के अंदर भी कितने सारे हजारों पेड़ है ऑलरेडी। On that instance, this reminds me of how the child only starts crawling first. The child does not stand and start running and walking. तो ये इनेट इंटेलिजेंस होता है हर किसी के अंदर, है ना? Yes. हर किसी के अंदर इंडियन। सो दैट इज वाई एक ईशोपनिषद में एक बहुत ही पावरफुल एक वर्स है, Mm-hmm. ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सो Okay. व्हाट डज इट मीन इज Mm. एवरीथिंग इज फुल, Mm. यू नो, वी आर फुल, Mhm. वी केम फ्रॉम फुल, Mm. मतलब कंप्लीट बेसिकली। Whole. Mm. That is whole, this is whole. From the whole emerges. When the whole is taken from the whole still remains. Wow. Exactly. For example, a lovely example of this is like hologram. Mm. Yes. So if you see hologram, each part of the hologram Mm. is complete in itself. Mm. So nature, as he said, nature has innate intelligence. It is not created by us. And like if you see at chaos also, Mm-hmm. When Carl Jung said that in every chaos Mm. there is a cosmos. Like chaos is nothing but a phase transition. Mm. Like in chaos theory, in mathematics also, like when they talk about chaos theory, there is something called bifurcation point. Mm-hmm. So in Jungian psychology, this is called like individuation or ego dissolution. Hawkins के model में crossing one attractor field to another or moving from 200 to 200. The chaos is not a failure. It is a system reorganizing at a higher order. Mm. So I think it's all interrelated. Arvind also mentioned that what looks totally unrelated to the human eye is actually having a deep correlation only if we raise our consciousness. Mm. Wow. Insightful. चलो आगे बढ़ते हैं. Let's complete this section and then we'll close this session. Causality within the observable world has conventionally been presumed within the Newtonian paradigm to work in the following manner: A, B, C. This is called the deterministic linear sequence, like billiard balls sequentially striking each other. The implicit presumption of Newtonian paradigm is A causes B causes C. In this scheme of material determinism, nothing is inherently free, but only the result of something else. It is thereby limited. What this system really defines is the world of force. Force A results in force B, which is then transmitted to force C with consequence D. D in turn becomes the beginning of another series of chain reaction and infinitum. This is the left brain world, mundane and predictable. It is limited. It is the limited Newtonian paradigm whatever the number is 450 from which the conventional science operates. Familiar, controllable, and uncreative, determined, and therefore limited by the past. It is not the world of genius, but to many it feels safe. It is the world of productivity and practicality. To creative people, however, it seems pedestrian, prosaic and uninspiring and limiting. Strikingly, our research indicates that casualty
actually operates in the completely different manner, in which the attractor pattern complex ABC splits through its operands and is expressed instead of seemingly sequence A, then B, then C of perception. This is ABC, attractor pattern, वहां से operands and वहां से observable pattern or event. Okay. From this diagram, we see that the source ABC, which is the unobservable attractor pattern, results in the invisible sequence ABC, which is an observable phenomenon within the measurable three-dimensional world. The typical problem the world attempts to deal with exists in the observable level ABC. But our work is to find the inherent attractor pattern, the ABC out of which the ABC seems to arise. Oh, this description is how the universe works is in the accord with the theories of physicist David Bohm, who was described as holographic universe with an invisible implicate enfolded and a manifest explicate unfolded order. Okay, this is what Shiv was, sharing with us, the ABC, the this thing, holographic, this universe. We see that the concept ABC, which is within the invisible enfolded universe, with activate emergence into the visible world to result in the sequence ABC. Thus, the visible world is created from the invisible world and is therefore influenced by the future. The capacity of invisible concept of materialize is based on the power of the original concept itself. The more an inner ABC is aligned with the universe principle of life, the more effective its ABC in the outer world. In the simple diagram, the operand transcends both the observable and the non-observable. We might picture them as a rainbow bridging the deterministic and non-deterministic realms. Therefore, nothing occurs in the world that is not first conceived in here. The idea of construction, the world's tallest building, produced in an invisible concept which eventually became the Empire State Building within the visible world. All expressions out here arise first from within here. This scientific insight corresponds with the view of reality experienced throughout history by enlightened sages who have evolved beyond consciousness to the state of pure awareness. Consciousness itself is the key to the sought for unified field theory of everything. Statement calibrates at 1000. Certain concepts and values have much greater power than others. An ABC may be either on high energy attractor or a low energy attractor. Simply stated, powerful attractor patterns make the body go strong and weak patterns make the body go weak. If you hold forgiveness in mind, your arm will be very strong in the clinical muscle test. If you hold revenge in mind, the arm will go weak. For our purposes, it is really only necessary to recognize the power is that which makes you go strong, while force makes you go weak. Love, compassion, and forgiveness, which may be mistakenly seen by some people as submissive, are in fact profoundly empowering. Revenge, judgmentalism, and condemnation, on the other hand, inevitably make you go weak. Therefore, regardless of moral righteousness, it is a simple clinical fact that in the long run and the weak cannot prevail against the strong. That which is weak falls into its own accord. All the great teachers throughout the history of our species have merely taught one thing over and over, is in whatever language, at whatever time. All have said simply,
Give up weak attractors for strong attractors. Attractors are organizing principles, and organizing principles have different levels of power. This is one of the secrets of the success of powerful people. Their entire lives are automatically and effortlessly organized by their complete and total alignment to very high and powerful principles. Wow. So I think we have actually discussed parts of it, right? In our talk, अभी थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे, but yeah, the ABC model, मुझे ऐसा लगा ABC is like a linear, जो हम कहते हैं cause and effect. और जो पहले की साइंस थी that said कि event A caused event B caused event C. But now the research says that there is an invisible ABC behind the scene. So there is always a root cause. जैसे we were discussing a few minutes back कि how some little shift, जो butterfly effect भी था, butterfly ने तो कहीं और wings spread किए थे and fluttered, and tornado कहीं और आ गया. So everything is working in pure alignment. किसी और कंट्री में कुछ XYZ हो रहा है की वजह से मेरे यहाँ पे घर में कुछ इफेक्ट आ सकता है, इम्पैक्ट आ सकता है. But that ABC is kind of behind the scenes. If we keep, अगर मैं अपनी as a normal human day to day life के बारे में सोचूं, तो अगर if I keep attracting disrespect, है ना, तो maybe the problem is not the A event, B event or C event. Maybe there is an invisible inner pattern on which I need to work. उसको हमारे को समझना और डिकोड करना जरूरी है. So nothing appears outside that is not conceived inside. I think on day 2 or day 3 also I was sharing ki how everything that we see outside is more beautiful inside, and because of that it has come out in the world. हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम घंटी बजाते हैं मंदिर में पूजा करते हुए, जोत जलती है वहां पे. एवरीथिंग was first inside of us, जिसको somehow दिखाने के लिए कि what is inside of us was brought outside. Likewise, any idea, जो भी हम लाइफ में कुछ बना रहे हैं, even if it was a wheel, किसी ने तो उसको just at a thought level सोचा होगा ना, कुछ तो कंसीव किया होगा इनसाइड ऑफ देम कि हाँ ये अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से आज हमारे पास प्रॉपर नाइस क्वालिटी व्हील्स हैं. किसी ने सोचा होगा कभी इनविजिबल में ही कि ओ हाउ गुड इट वुड बी इफ आई कुड जस्ट रीच समवेयर इन अ फ्यू आवर्स, है ना, तो एरोप्लेन्स बन गए. दैट थॉट वो विजिबल नहीं होता. जो बाहर दिख रहा है वो पहले अंदर था. दैट इज वाई वो बाहर आ रहा है. बहुत अच्छे एक दो चीजें और भी इसमें थी. दैट हाई एनर्जी अट्रैक्टर्स जो होती हैं दैट इज पावरफुल. लो एनर्जी अट्रैक्टर्स जो हैं दैट इज इक्वल टू फोर्स, है ना. When you go towards higher frequencies, love, gratitude, understanding, acceptance, and everything, that makes you stronger. And when you go towards the lower frequencies, that is revenge, anger, guilt, shame, all of that makes you very weak. So now you have to work your way through it, I think. Yes. That is what I understood from what we have read in totality. Baki, yes.
Yes, absolutely. I think also one more thing I would like to add is that बहुत बहुत समय हम लोग जो करते हैं हम वो ऑन अनकॉन्शियसली करते हैं. फॉर एग्जांपल, they say in psychology that some people are narcissistic in Hmm. nature. Okay, but the narcissistic person who is displaying narcissistic tendencies, Hmm. he doesn't know that it is narcissistic. He Hmm. doesn't know that he is narcissist. He's a narcissist. And only when he is able to make the unconscious conscious, Hmm. as Jung puts it, as Carl Jung puts it, only when we are able to make the unconscious conscious, then we realize the truth. Hmm. Till that point, we are living in a zone of darkness. But how do you make them? How do they get conscious about it? Is the question. We cannot make anything. As Socrates also said one time that, I can't teach anybody anything. I can only make them think. Hmm. So you have to, I think, from what I've understood, we have to stir. We have to stir. जैसे हम चाय में वो शक्कर मिला के मतलब stir करते हैं. So we have to stir, or we have to do something to make the other people's consciousness get stirred. Hmm. So once the consciousness is stirred, then he will think. We can only make people think. We can't change anybody. That's for sure. Hmm. Because if he wants to change, he will change. If he doesn't want to change, he will not change. But the trigger that will make him change or not change is the way he thinks. Yes. Like Wayne Dyer also said one thing, the famous author, that when we change the way we look at things, the things we look at change. Yes. Right? So I think it's very important for us to enable that transformation and allow people to think differently by making the unconscious conscious. Perfect. Thank you. Thank you for adding that. Yes. Before we close today's session, any last words, anyone? Yeah, I just want to summarize what I understand, like, because already we are late. So ये जो लास्ट वाला है उसका मैं बताता हूँ. द मोस्ट ऑफ द जो क्लाइंट्स होते हैं, आई थिंक ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना. ओके, सो मैं जनरल बताता हूँ. तो जनरली लोग हिपोक्रेट होते हैं. जनरल, नॉट एवरीवन, बट दे आर नॉट अवेयर दे आर हिपोक्रेट. So actually, hypocrisy is not usually evil. It just people are misaligned with their authentic self, but they are not aware of it. जैसे शिव ने भी बताया. So they want to do something, but they are not doing it because there are underneath invisible attractor, real pattern पड़े हैं. जैसे किसी को कंपनी में अप्लाई करना है और वो नहीं कर रहा है, ठीक है, और वो रीजन देता है कि हाँ मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये कंपनी अच्छी नहीं है, या कंपनी में फॉल्ट निकालना शुरू करेगा, या किसी को पब्लिक स्पीकिंग करना है तो वो बताने लगेगा अच्छा ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, या मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, दिस दैट, बहुत सारा चीज है. तो बेसिकली बोल रहा है वो कुछ बाहर सरफेस लेवल पे, विजिबल लेवल पे, बट अंडरनीथ इनविजिबल अट्रैक्टर उसके हो सकते फियर ऑफ रिजेक्शन है, या इनसिक्योरिटी है, या ईगो प्रोटेक्शन है बेसिकली, या डिजायर फॉर अप्रूवल है उसको, सो बहुत बार ये मिसमैच होता है. उसको चाहिए कुछ लेकिन उसे खुद नहीं पता वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ही इज कंप्लीटली ऑब्लिवियस टू दैट. दो ब्लाइंड स्पॉट है उसके लिए. एंड जैसे शिव ने भी बताया कि जब तक अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं करता है तब तक ये चीजें नहीं होती है. बट यस, देयर आर वेज बाय विच इट कैन बी डन ना. बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं. नार्सिस्ट लोग बहुत सारा, लाइक साइकोलॉजी के हिसाब से नार्सिस्ट का कोई सोल्यूशन नहीं है. यू जस्ट नीड टू गिव अप दैट पर्सन, बट ऐसा नहीं है. बहुत सारे नार्सिस्ट लोगों को मैंने भी ठीक किया है, मतलब आई हेल्प देम टू, बाकी तो वो खुद ही होता है. सो कहने का मतलब यस, ये इनविजिबल जो चीजें है जैसे उसको दिखने लगती है वो सब समझ में आने लगता है, एंड द पर्सन स्टार्ट्स चेंजिंग हिमसेल्फ.
क्योंकि एवरीवन नेचुरली नेचुरली एक्चुअल में एवरीवन इज ऑन द हायर स्टेट। जैसे ही कोई बॉर्न होता है ना, हर कोई हायर स्टेट में ही है, लव जॉय वही पे है। इट जस्ट दैट समथिंग हैपन इन हिज लाइफ एंड देन स्लोली स्लोली वो इवेंट के बाद में वो मीनिंग देता गया एंड देन ही स्टार्टेड गोइंग इन द डाउन साइड, फोर्स वाले जोन में चला गया। अदरवाइज एवरीवन इज लाइक वो हायर जोन में ही था। Absolutely. तो Our इट्स नॉट natural दैट वी। अच्छा आप बोलिए। सॉरी, नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी स्टेटमेंट को जस्ट क्वालिफाई करना चाह रहा था कि हाँ एब्सोल्युटली ट्रू दैट हमारा जो नेचुरल स्टेट है वो हैप्पीनेस है, Yes. या वो जॉय का है। या बट जैसे आपने बोला, हमारे लाइफ में कुछ कुछ ऐसे घटनाएं हो जाते हैं या कुछ कुछ एक्सपीरियंस ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से देयर इज इम्बैलेंस, एनर्जेटिक या इम्बैलेंस। या एंड एंड देन इंटरेस्टिंग यहाँ पर। जी, हाँ बोलिए बोलिए। and then there are some pattern changes which happen within the body and mind. And the mind body connection is also huge. Like those people who have mental health issues also, they say that it is just mental, but it is not just mental. If you do a SPECT scan or a fMRI, it is revealed that there are some overactive overactive patterns going on in certain areas of the brain, like the basal ganglia or maybe amygdala or something like that. You know, you can actually see the physical impressions of those overactivity. So it is absolutely true. And यहाँ पे भी वो butterfly effect हो रहा है जो, and because trauma is very relative. What can be traumatic to me may not be traumatic to you. What can be traumatic to you may not be traumatic to me. तो किसको क्या ट्रॉमा हो सकता है, किस इवेंट से, किस एक्सपीरियंस से, वो कोई नहीं कह सकता। एंड आफ्टर द ट्रॉमा दैट पर्सन सफर्स फ्रॉम सच अमाउंट ऑफ इम्बैलेंस, दैट उसके वजह से काफी सारे चेंजेस हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द बॉडी में जो चक्रास है, दोज गेट ब्लॉक्ड sometimes. And when the Muladhara chakra, which is the root chakra, they say, when that gets blocked, so many other things get blocked, like your energy gets blocked. Of course, you are not able to operate at your real potential. And so financial challenges आ जाते हैं लाइफ में, relationships खराब हो जाते हैं. So it has a ripple effect. Sorry, Arvind. या थैंक यू फॉर एडिंग दैट। तो यस, ये सारी चीजें होती है एंड बेसिकली जो चीजें हम इनविजिबल है, जैसे मेरे लाइफ में भी बहुत सारा चीज है। व्हाई आई एम इन दिस फील्ड बिकॉज समथिंग हैपेंड इन माय ओन लाइफ, है ना। सो आई वाज आल्सो oblivious to that, but once I got aware of that, चीजें स्टार्ट हो गई चेंज होना। बट एक्चुअली अगेन वो भी पैटर्न होता है हमारे साथ जो होता है। द बेस्ट गिफ्ट वी गेट फ्रॉम द यूनिवर्स इज द मोस्ट painful moment in our life. No. The best gift is received in an ugly wrapper. Right? We don't want to open it, but that gift is the diamond inside in it. So yes, so ये भी पैटर्न है जो, जैसे वो स्टीव जॉब्स का है ना, we can't connect the dots looking forward, we can only connect the dots looking backward. Absolutely. So ये पैटर्न है, right? Like I am in this field क्योंकि when I was, मतलब बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। There is so it's a pattern, but वो invisible जब visible हो जाता है, so everything changes and वो everything कहते हैं ना, changes. जैसे वो कहते हैं, the cave you fear to enter holds the Yeah. treasure you seek. Yes. I think Joseph Campbell says that. And so true that the cave you fear to enter holds the treasure you seek. Like हम लोग जिससे भागते हैं, जिससे डरते That हैं, is the space the that you need to solution. actually dive The into. solution. And Yeah. and I think Rumi also told about this in a different quote. The light is the place where the what is that light? कुछ quote है उनका, ये मैं भूल रहा हूँ अभी. The wound is the place where the कुछ कोट है उनका, बहुत ब्यूटीफुल कोट है कि what we think is as actually a wound is nothing but the source of the realization. It's saying The wound is the the wound place. is the place where the light enters you. Correct.
Wow. See, we don't look at that wound from that angle. But as Arvind said, sometimes trauma causes human awakening. हाँ कि वो ट्रॉमा की वजह से वूंड होता है, हम लोगों को मेंटल वूंड होता है, और हम कुछ लोग तो सफर करते रहते हैं उसमें लाइफ लॉन्ग, एंड कुछ लोग दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस एंड देन गो थ्रू पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ. Yes. And even abhi थोड़े दिन पहले ही I have a friend who had some relationship issues, and she had a big fight with her husband and everything, and two of the friends were talking to her, and one suggested ki don't waste this energy can actually manifest into something good. Sit, write what you want from life and start working on it immediately, rather than dwelling on the hurt and staying there. Use the power of that hurt and go up, rise higher. And that was such a beautiful moment for her as well, Yeah, because she sat yeah, overnight and she was like, oh God, I know what I want to do in life. We were like, absolutely, wow. absolutely. Like, I was seeing a video on YouTube about the Holocaust survivor, and he was saying hatred is a disease. Mhm. Of course, the hatred is a disease because when you hate a person, first you destroy yourself Mhm. before you destroy anybody else. Yes. So the pain is not your punishment, it is a passage, it is like a tunnel, and you can turn that pain into power. Yes. या Wonderful. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. ये और हर किसी की लाइफ में पैटर्न ये होता ही है. लाइक इट जस्ट दैट वी आर नॉट कॉन्शियसली सीइंग दैट अनकॉन्शियस थिंग. Yeah, yeah. जैसे मेरे लाइफ का अगर मैं ब्रीफली बताऊं, लाइक व्हेन आई वाज 15 ईयर ओल्ड, 10th स्टैंडर्ड का था मैं, समथिंग हैपेंड एंड आई वाज, मतलब मैं सुसाइड कर रहा था लिटरली. आई वाज जंपी था मेरा 5th फ्लोर से. 70% इनफैक्ट मैं लीन भी हो गया था. सो बट समहाउ लाइक एक जो दिवाली का रॉकेट होता है वो आया, जस्ट बूम, एंड आई जस्ट केम इनटू कॉन्शियसनेस, ओके व्हाट आई एम डूइंग. एंड सो यस, अगर वो जो चीज हो रहा था जिसके कारण आई वाज सो मच इनटू दैट पेन, और जो हो रहा था, बट दैट वाज द बेस्ट गिफ्ट जो हुआ. जो पेन के बाद में द जर्नी स्टार्टेड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. फिर मैंने पूरा एजुकेशन ही छोड़ दिया था. पढ़ाई वढ़ाई में 3-4 साल कुछ नहीं किया था. देन लाइक इट्स अ कंप्लीट केओस वाला जर्नी था. बट देन अ मॉन्क केम, लाइक गौर गोपाल दास, अगर सुना होगा आपने. तो ही फाउंड मी, मैं कुछ नहीं कर रहा था. ही फाउंड मी एंड ही स्टार्टेड लाइक, फिर आई अंडरस्टूड कि ओके मुझे करना क्या है. आई वांट टू बिकम मॉन्क लाइक हिम. तो आई वाज ट्रेनिंग अंडर हिम, सब हो रहा था. आई वाज ट्रेनिंग. तो ही सेड ओके इफ यू वांट टू जॉइन मॉनेस्ट्री जस्ट लाइक मी तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा. एंड आई सेड नो, आई डोंट वांट टू. जस्ट वो मुझे जाना ही नहीं उस लाइफ में. मुझे पता है अभी क्या करना है. नो, ही सेड द क्वालिफिकेशन है मॉन्क बनने के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम. एंड आई ओके ठीक है, फिर मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगा अगर करना ही है तो, नहीं तो मुझे कुछ नहीं पढ़ना बाकी सब. एंड दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड. तो मेरे पास फिलोसॉफी था, भगवत गीता, भागवत पुराण सब, बट साइकोलॉजी जो मेरे अंदर के जो डीमंस है उसी के साथ में आई वाज नॉट एबल टू डील. Maybe that wisdom had not evolved. या विजडम, हाँ, नॉलेज था बट विजडम वाज नहीं था. सो इट रिक्वायर्ड दैट मैच्योरिटी. देन जब ये चीजें समझने आने लगी, देन आई स्टार्टेड हेल्पिंग. सो अभी मोर देन आई थिंक 6,000 से ज्यादा लोगों को सुसाइड से आई वाज एबल टू फॉर्चुनेटली हेल्प. And that's your calling. I think that's your calling. या और बहुत सारे लोगों को अपना जॉब ट्रांजिशन करने में, राइट जॉब में जाने में, सो एवरीथिंग इज पैटर्न है. जब मैं अभी पलट के देखता हूँ तो ओके इट वाज नेसेसरी. जो हुआ वो जरूरी था, मैं जो अभी कर रहा हूँ उसके लिए. And वो कहते हैं ना, our plan versus God's plan. या और universe's plan. कि हम लोग कुछ सोचते हैं, because but God has always got a bigger plan. Bigger plans. या Wow. सो दीज आर ऑल पैटर्न्स जो हमें बहुत बार, लाइक देयर वाज अ टाइम मुझे लगता था कि ओके मैंने किया, लाइक आई वाज एबल टू हेल्प दिस पीपल एंड दैट. मैं इतना
बट ऑल दैट थिंग्स अगेन वो भी एक पैटर्न होता है हमारी लाइफ में प्राइड आने वाला. देन दैट प्राइड कन्वर्ट्स इनटू अ पाउडर, यू नो. जब फिर ह्यूमिलिटी लाने वाला चैप्टर आता है हमारी लाइफ में, फिर इट्स ऑल पैटर्न जो हमें डेवलप कर रहा है या हमें बेसिकली बीइंग लेवल पे लेके जा रहा है, जो हायर कॉन्शियसनेस की तरफ, यू नो. या तो लोग हमारी लाइफ में वैसे ही आते हैं, हमारी लाइफ में जो कोचेस मेंटर्स आ रहे हैं. एंड आई वाज फॉर्चुनेटली उस समय पे 2009-10 में लाइक गौरगोपाल दास अभी जितना फेमस है उतने नहीं थे. ही यूज्ड टू गिव अस लॉट ऑफ टाइम इन कॉलेज डेज. 3-3 दिन हमारे साथ में हमको मिल जाता था. Oh, wow. So everything is an opportunity attractor वाला चीज है basically. Yeah, frequency Everything जिसमें हम depends ट्यून होते हैं. like everything depends on हम किस नजरिए से देख रहे हैं उसको. अगर हम Yeah, पेन के नजरिए से देख रहे हैं तो पेन में ही रहेंगे, और अगर You उसको see it as an opportunity. अवेकनिंग के नजरिए से देखते हैं तो इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी. yeah. पर लेकिन हमारा नजरिया जो है वो हमारे स्टेट पे निर्भर करता है. बिल्कुल. That's why even in I follow like I follow Nichiren Buddhism. तो उसमें भी बोलते हैं कि फर्स्ट थिंग जो है, you have to change your life state. You have to change your internal frequency and vibration. Then only you can change your energy. Then only you can go to a higher life state. Because when you are in lower life state, your consciousness is blinded, completely blinded. You may have eyes, but even if you have eyes, you have no vision because everything is blocked. I love that. Wow. Yet another powerful session. Thanks to you all. Chalo, that was end for today. Let's close this session here. We have a weekend off and we will meet as day 5 on Monday. I really look forward to have each one of you in this room to be with me on this journey to read ahead on Monday. Till then, take good care of yourself, enjoy your weekend, and lots of love and blessings. Same to you, Karishma. Take care. Take Bye-bye. care. Bye. Okay, thank you. Bye. Bye-bye. Vishnu, thank you. Have a lovely weekend all. Thank you. Same to you. Same to you.